अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यकीन आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम क्रिप्टो वेबसाइट के पार्ट 2 को गो थ्रू करने जा रहे हैं। और आई होप पार्ट 1 आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू रिक्वायर द सोर्स कोड आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। सो स्टे कनेक्ट विद मी गाइस, और लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। और कुछ मेरे यूट्यूब फैमिली के कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आपकी जितनी भी वीडियोस हैं काइंडली उनके अंदर जो है वो आप ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड किया करें। सो हमने यही किया है। लास्ट जो है वो हमारे लेक्चर्स के अंदर हमने इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट भी प्रोवाइड करी है। सो आई होप गाइस आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो जो भी आपको लगे कि कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है तो काइंडली आप हमें गाइड कर सकते हैं। हम आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करेंगे। सो चलते हैं अब हम गाइस अबाउट सेक्शन के साइड पे। और यहाँ पर हम अब सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा आवाज़ का मसला है। सो आई होप आप सबको पता है कि सीजन्स चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। सो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा इफ़ यू हैव एनी इशू। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं HTML पे और सेक्शंस पर। हम काम कंप्लीट करना शुरू करते हैं अपना। सो यहाँ पर हमें क्लास क्रिएट कर देता है, क्योंकि अब हम अबाउट के सेक्शन के अंदर हैं। तो यहाँ पर हम अबाउट सेक्शंस को गेट कर लेंगे। इसी के साथ साथ गई मुझे लेआउट पैडिंग की भी मैंने क्लास बना के रखी हुई थी। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द आईडी ऑफ अबाउट, ताकि हम इसे इंटरलिंक करने में आसानी रहे। सेक्शन को नीचे लेकर आ जाते हैं गाइस, और फर्दर मोर यहाँ पे क्लासेस पास करते हैं। पहली क्लास हमारी है कंटेनर। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक क्लास जो है वो डिज़ाइन करेंगे हेडिंग कंटेनर की। Okay, after that we are going to implement here another class is a heading center. Okay, so again इस div के अंदर guys you can take here the h2। यहाँ पर आप लिख दें about। so इस span का tag provide करना है मुझे यहाँ पर। so move on the outside from h2। here is create the paragraph। पैराग्राफ में आप कोई भी क्रिप्टो के बारे में राइट डाउन कर सकते हैं, वो हम इन दी एंड पे राइट डाउन कर लेंगे। नाउ बैक फ्रॉम दिस div create here the row class। again you can create here the column। so मैं मीडियम कॉलम क्रिएट कर रही हूँ। इसी के अंदर अगैन डू यू रिमेंबर इमेज बॉक्स। सो हमारी क्लास मेजॉरिटी क्लास हमने बना के रखी हुई है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। यहाँ पर हम एक इमेज गेट कर लेंगे, सिस्टम के अंदर है, हम इजीली उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अगैन इन दो डिव से बाहर आ जाते हैं गाइस। सो यहाँ पर यू कैन क्रिएट हियर अगैन कॉलम। तो यहाँ पर क्लास डिटेल बॉक्स की बना लेते हैं। ओके, इसी के अंदर रहते हुए गाइस h3 गेट कर लेंगे। सो वी और the kings। I just write here randomly tags about। इसी के साथ साथ you can write it here the paragraph। we are the future, I think it's looking good। okay, आने वाला वक्त obviously depend कर रहा है क्रिप्टो पे। we are the future। so इसी के साथ साथ implement here the paragraph। so यहाँ पर relevant to paragraph आप get कर लेंगे। so we are going to take another paragraph। ओके, इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हेयर द आउटसाइड फ्रॉम द पैराग्राफ। हमें यहाँ पर 3 पैराग्राफ गेट करने हैं। सो इम्प्लीमेंट हेयर द एंकर टैग।
और एंकर टैग के बाद हम यहाँ पर रीड मोर, इसी के साथ साथ एंकर टैग और आपने मल्टीपल डिव से बाहर आना है एंड देन यू कैन बैक हियर दिस सेक्शन। तो एटलीस्ट 4 डिव से बाहर का सेक्शन है। और इसी के साथ साथ गाइस आपका यहाँ पर अबाउट का जो एक क्राइटेरिया है इट्स फिनिश्ड। सो यहाँ पर हम जो नेक्स्ट बनाएंगे हम उसको यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। वी आर गोइंग टू मेक हियर द वाई सेक्शन। तो यहाँ पर हम वाई सेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। मूव ऑन दी CSS गाइस। CSS के अंदर फटाफट हम जल्दी से अबाउट को क्लियर करते हैं। सो हियर इज़ द अबाउट सेक्शन। सबसे पहले इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड कलर। So here is the color. Okay, move on the next. The font color. Here is white. Okay, move on the next class. Next class is about section again. और इसी के अंदर आपने हेडिंग कंटेनर बनाया है। So again implement here the margin bottom. We are going to take care of the 45 px. इसी के साथ साथ implement here again the about section. और यहाँ पर आपने एक रो बनाई है। So again WebKit box. WebKit box align centered. MS flags align center and then align item as well as centered. Move on the next. So जो भी पिक्चर लेंगे about section के अंदर जो हमने image box लिया है इसके अंदर जो we are going to take here the image in the end its maximum width is 100%, not the 1001. Okay, move on the next. इसी के साथ साथ here is the about section and then detail box के अंदर जो H3 heading है, क्योंकि ज़्यादातर क्लासेस हमने ऑब्वियसली बनाई हुई है। फर्दर मोर फ्यू सेटिंग्स हैं जो हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, इसलिए सबके साथ मैं अबाउट सेक्शन राइट डाउन कर रही हूँ। इसी वजह से कि जहाँ जहाँ पर रेलेवेंट क्राइटेरिया है अबाउट का वो वहीं पर ही उसको मीट कर लेगा। सो यहाँ डिटेल बॉक्स एंड देन पैराग्राफ, जो भी जितने भी पैराग्राफ दिए हैं उन सब के अंदर मार्जिन टॉप इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अदरवाइज जो मेजर सेटिंग है गाइज वो हुई भी है सबकी। इसी के साथ साथ अबाउट सेक्शन एंड देन डिटेल बॉक्स के अंदर जो एंकर टैग लिया हमने, सबसे पहले डिस्प्ले लाइन ब्लॉक, इसी के साथ साथ पैडिंग इज 10 px, 45 px, इसी के साथ साथ implement here the background color. So implement here the color. After that the font color. So implement here the border radius is 0 px. Again implement here the WebKit transition. So all is 0.3 seconds, and after that implement here the transition, all 0.3 seconds. इसी के साथ साथ border implement कर देंगे none, and implement here the margin top is 15 px. Okay, move on the next. So again here the about section and then detail box and anchor hover. इसी के साथ साथ implement here the background color. Okay, move on the next. So यहाँ तक गाइज अब हमारा जो है वो अबाउट सेक्शन कंप्लीट है। अब हम आते हैं वाई के ऊपर और सिंपल इसको पिक्चर्स दोनों के साथ इम्प्लीमेंट कर देंगे।
तो पहले हम वाई सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। बैक ऑन दी वाई सेक्शन और सिंपल यहाँ पर सेक्शन क्रिएट करते हैं अगैन। So we create here the class is y section। So इसी के साथ साथ हम यहाँ पर लेआउट पैडिंग की क्लास भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर गाइस क्योंकि अगर मुझे आईडीज़ कॉल करनी है तो मैं यहाँ पर एक y की आईडी का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी लाइक दिस वे। ओके, सेक्शन को बॉटम पे ले जाते हैं और यहाँ पर अगैन क्रिएट हियर द कंटेनर क्लास। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द हेडिंग कंटेनर। ओके, इसी के साथ साथ मैं हेडिंग सेंटर की भी क्लास इसी में ही मर्ज कर देती हूँ। ओके, here is the h2 y choose, बल्कि मैं इसको h2 कर देती हूँ, not for h1। Here is the span tag। Okay, you us। okay, इसी के साथ साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट। इस डिव से बाहर आ जाएंगे एंड यहाँ पर क्रिएट करेंगे y कंटेनर की क्लास। create here the box class, again image box class implement here। इसी के अंदर हम इमेज सोर्स के ऐड कर लेंगे। implement here the alter tags। so इसके बाद we are going to create here another class is a detail box। so here is the detail box। after that you are going to take here the h5। अभी यहाँ पर हमें अपने एक्सपर्ट थीम को ऐड करना पड़ेगा। एक्सपर्ट मैनेजमेंट, यहाँ पर हम randomly टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। again we are going to out from the both divs। यहाँ पर हम एक बॉक्स की क्लास बना लेंगे गाइस। create here again the image box class inside this box। take care again image source, ऊपर से चाहें कॉपी कर लें, बार बार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि मेरा जो div है वो मिसमर्ज ना हो। so here is अगेन आपने जिस बॉक्स से कॉपी करना है और बॉक्स से फिर आप रेलिवेंट अब इसको लिखते जाएंगे। ओके, अगेन here is the detail box class and again h5 कैट कर लेंगे। here is the secure investment। okay, and again you can take it here the paragraph and again out from the two divs or फिर multiple time you can take here। so यहाँ पर मैं again दो div के बाद कॉपी कर लेती हूँ। इससे ये होगा कि इसके मुझे इसको राइट डाउन करना नहीं पड़ेगा। कुछ 4 या 5 बॉक्सेस फिलहाल हम 4 लेते हैं। सो अगेन मैं यही काम करूँगी। यहाँ से मुझे कॉपी करना है बॉक्स से लाइक दिस वन, कॉपी
then make here the paste 3 and then 4. ठीक है, so simple text change कर लेते हैं. So the insist trading, and the last one is the happy customer. So here is the ओके गाइस. अब सिंपल पैराग्राफ ऐड करते हैं, कोई भी रैंडम वेबसाइट्स और सिंपल पिक्चर्स के सोर्सेस ले लेंगे. लेकिन इससे पहले हम जो है वो इसको वाइंड अप करते हैं कंप्लीट. सो इन दी लास्ट में आपने 3 डिप से बाहर आना है और यहाँ आकर यू कैन क्रिएट द क्लास ऑफ बटन. सो btn बॉक्स, इसके अंदर you can create here the anchor tag or write it here the read more. Okay, so again आपका यहाँ पर सेक्शन कंप्लीट हो जाता है y का. और अब हम आते हैं CSS की साइड पे and then we are going to create here the comment about y. Okay, so let's begin the y section. उसके बाद डायरेक्टली फॉन्ट इम्प्लीमेंट करते हैं and then we're going to implement the final. सबसे पहले है y files section और इसी के साथ साथ मैं बॉक्स के ऊपर भी सेटिंग इम्प्लीमेंट कर देती हूँ. So यहाँ पर सबसे पहले मार्जिन टॉप, here is the 45 px. After that we are going to implement the display. Here's the WebKit box. Again display, here is the MS flags, and after that we are going to display obviously flags. So the WebKit box orient, so vertical. After that again the WebKit box direction, here is the normal. After that we are going to implement here the MS flags direction. Here is the column, and again the flags direction, it's column. After that we are going to implement the WebKit box align, centered, and again the MS flags align, centered. After that the align item as well as centered. Okay, move on the next is the tags align as well as not in the end is a centered. Okay guys, move on the next is a y selection, y section. Here is the box, and after that we are going to implement here the image box. Implement here the margin bottom 20 px. After that here is the width and height, sorry, width is 120 px. Again implement here the 120 px. So here is the minimum width and minimum height as well as the 120. And again minimum the
width is 120 px. तो चारों को आपने 120 px रखना है. Implement here the border radius 100%. After implement here the border is 5 px solid. Implement here the color, this one. Again implement here the display. So the WebKit box, again display MS Flags box, and after that again displays flags. Okay, move on the WebKit box pack, centered, MS Flags pack, centered, and then justify content here, centered. Now move on the WebKit box align, centered, and then MS Flags align. Again implement here the centered. Last one, there is the align item. You can get obviously centered. Okay, move on the next. So they implement here the Y section. So the box and that image box के अंदर जो हम image का ऐड करेंगे उसकी जो settings है वो width decide कर लेते हैं हम. It's a 55 px normally for every picture. Height is auto. After that fill here is this one. Okay. Change the color. I think हम यहाँ पर dark ऐड कर लेते हैं, not a blue, sorry not a black, मुझे dark blue required है. इसको back करती हूँ. Get the list of blue. Okay, fine. Move on the next. Implement here the Y section. After that implement here the box, H5 headings. So font weighted is bold. After that margin bottom is 10 px. Move on the next. Y section, box and the para. So here is the margin bottom is 0. The Y section. So here is the display. MS Flags box. Again displays the flags. So WebKit box pack. Again implement here centered. Move on the next MS Flags pack. Again implement here the center value. So here is the justify content. The last one they is implement here the margin top. Here's 10 px and then 45 px. I think we are going to take only 45 px for 4 side, only top side. Okay. So implement here the Y section.
and then BTN box. So here is the anchor tag. So here is display line block. After that, implement here the padding is 10 px and then 45 px. So implement here the background color. Here is the background color. Implement here the font color, become white, and then implement here the border radius is the 0. So implement here the WebKit transition. I'm gonna write it here. .3 seconds, and then implement here the transition. So implement last one, the setting is a border. Okay, move on the next. Is the last property. इसके बाद guys सब पे picture implement करते हैं, and then we are going to share the final result with you. So BTN box, here is the anchor tag. Implement here the hover. So implement only the background color. So here is the color. Okay, fine. अब simple guys picture implement करते हैं one by one, and then implement here the paragraphs. So back on, पहले हम about को complete करते हैं, then फिर हम इसको complete करेंगे. So where is our about? Here is our about. So जहाँ पे हमें text required है वहाँ पर paragraph get करते हैं. So यहाँ पर मैं randomly text write down कर देती हूँ like this one. यहाँ में पिक्चर गेट करनी है. सो कैसे यहाँ पर पिक्चर ऐड करते हैं, और यहाँ पर इमेजेस पर आकर अबाउट की पिक्चर है उसको हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू रन दिस. सो नाउ हियर इज़ द रिजल्ट, और यहाँ से हम ये आपका अबाउट का एरिया आ गया. जैसा आप यहाँ पर हमने सिंपल टैग्स एडिट किया, आप भी किसी भी रैंडम वेबसाइट से यहाँ पर मल्टीपल टैक्स राइट डाउन करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं. सो वाई चूज़ पर आते हैं, और यहाँ पर हम 3 से 4 पिक्चर्स ऐड करते हैं जो कि आइकन फॉर्मेट में होती हैं सिंपल, और कुछ पैराग्राफ राइट डाउन करते हैं. ठीक है गाइस, मूव ऑन द नेक्स्ट. VS कोड पर आते हैं. सो यहाँ पर पैराग्राफ गेट करना है आपने. ओके, सो वाई पर आ जाते हैं, और वाई पे सबसे पहले पिक्चर ऐड करते हैं यहाँ पे. सो W1 एक्सपर्ट मैनेजमेंट, और सिंपल यहाँ पर पैराग्राफ गेट जस्ट पेस्टेड हेयर टैग्स. सो इसको भी रन कराते हैं और देखते हैं. ओके, सो लुक लाइक दैट. मैं ये चाह रही हूँ गाइस कि माउस होवर करूँ तो ये पिक्चर जो है थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए इसका साइज. तो सिंपल हम कुछ नहीं करते, इंडेक्स पर आता है और यहाँ से इसी पे ही इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इमेज बॉक्स के ऊपर हम यहाँ पर इसके अंदर होवर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और इसको हटा देते हैं फिल को. ओके, इसकी पिक्चर को इंक्रीज़ करने के लिए मैं 80 px रख के चेक कर लेती हूँ. ओके, अब यहाँ पर कर्सर बिकम अ पॉइंटर कर देते हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक दिस अगैन. सो नाउ इट्स फाइन, इट्स लुक लाइक दैट. आप देख सकते हैं इसी तरीके से तीनों पिक्चर्स के ऊपर भी सेम प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट हो जाएगी. सो टेक मोर 3 images. सिंपल मेथड है. सो अगैन back on our HTML. So take here another image, W2. So insist reading, I think इसका भी text copy कर ले. So again write here the random text. So यहाँ पर
ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पर सॉरी, मुझे यहाँ पर पिक्चर टूल ही नहीं थी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ओके, पिक्चर 1 इज हेयर, सो पिक्चर 2 इज हेयर। चलें चेंज कर लेते हैं। W2, so W3 is here, सिंपल 3 चेंज कर रही हूँ। एंड देन टेक हेयर, सी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं या कहीं से भी ऊपर से कोई भी रैंडम, and write it here this another tags. So here is the fourth picture. So यहाँ पर भी randomly कोई text copy करते हैं। So here is the last, अब इसको run कराते हैं। Then you can see the implementation of our Y section. So guys, यहाँ तक हमारी जो है वो complete हो गई है। अब हम बढ़ते हैं next सेक्शन की साइड पे। यहाँ पर रीड मोर का हमने बटन क्रिएट किया चाहिए। यहाँ पर इसकी थोड़ी सेटिंग करते हैं रीड मोर की। तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिस्टेक है। सो आई थिंक हियर इज़ द मिस्टेक है, हमने क्लास में गैप नहीं दिया हुआ। सो देखते हैं बाय रिजल्ट। ओके फाइन, यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। सो मूव ऑन दी नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ पर हम टीम सेक्शन का जो क्राइटेरिया क्रिएट करते हैं। सो मूव ऑन हेयर, क्रिएट हेयर द सेक्शन, and now close this section. So create here some classes in section. So class पर आते हैं and then we're going to create here the team section. इंडिकेशन कर दें। इसी के साथ साथ ऑब्वियसली हमने पहले ही लेआउट पैडिंग की क्लास बना के रखी हुई जो कि हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ आईडी बना लेते हैं टीम की, के ज़रिए हम इनमें लिंक क्रिएट कर देंगे। तो सेक्शन के क्राइटेरिया को नीचे लेकर आ जाते हैं एंड देन यहाँ पर अगैन हम क्लास बना लेते हैं कंटेनर फ्लूट। फ्लूट एंड कंटेनर फ्लूट में क्या डिफरेंशिएट है ये मैंने बूटस्ट्रैप की सीरीज़ में कम्प्लीटली बताया है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप वहाँ जाके इसको चेक कर सकते हैं। सो हियर इज़ द हेडिंग कंटेनर, and after that heading centered, we are calling here 2 classes. तो इसी के साथ साथ इसे div के अंदर create here the h2. So यहाँ पर we are going to create the class. So इसी के अंदर हम write down करते हैं और मैं यहाँ पर स्पैन दे देती हूँ। स्पैन टैग हेयर और सेंटर में वी आर गोइंग टू मार्क इट हेयर द टीम। सो डिव से बाहर आ जाते हैं अगैन एंड देन हेयर क्रिएट हेयर द अगैन टीम कंटेनर। सो टीम कंटेनर here, okay, after that we are going to add here some row। इसी के साथ साथ गाइस हम यहाँ पर कॉलम लेंगे। सो यहाँ पर मैं कॉलम लार्ज 3 की क्लास ले रही हूँ और इसी के अंदर मैं ऐड ऑन कर देती हूँ कॉलम स्मॉल 6। ठीक है जी। तो इसी डिव को नीचे लेकर आ जाते हैं। यू कैन क्रिएट इट हेयर द क्लास बॉक्स
इसी के अंदर क्रिएट हियर द इमेज बॉक्स क्लास। So again create here the image source। तो यहाँ पर गाइस जो भी टीम मेंबर्स हैं उसकी पिक्चर्स आप 1 by 1 ले लीजिएगा। यहाँ पर हम क्लास क्रिएट करते हैं image1 की। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर द ऑल्टर टैग्स एंड देन क्लोजेस हेयर। और इस डिफ के बाद यू कैन क्रिएट हियर द डिटेल बॉक्स क्लास। इसी के अंदर क्रिएट हियर द H5। अब जो भी टीम मेंबर्स हैं उसके नेम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। मेरी हाल्टन, ओके। इसी के साथ साथ क्रिएट हियर द पैराग्राफ। व्हाट आर द डेस्टिनेशन, वी आर गोइंग टू राइट इट हियर द डेस्टिनेशन। मार्केटिंग head। ओके, सो पैराग्राफ के बाद गाइस अगेन हम इस डिफ से बाहर आ जाएंगे एंड देन इसी डिफ से बाहर आने के बाद क्रिएट हियर द सोशल बॉक्स क्लास। तो यहाँ पर अगेन वी आर गोइंग टू क्रिएट द सोशल बॉक्स। इसमें हम सोशल आइकन्स प्रोवाइड करेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले मैं एंकर टैग ओपन कर देती हूँ। एच रेफरेंस, फिलहाल हम यहाँ रेफरेंस नहीं दे रहे। तो इसी एंकर टैग के अंदर हम यहाँ पर आइकन क्लासेस के ऐड कर लेंगे। तो आइकन क्लास ऑसम फॉन्ट लिया हुआ है। क्रिएट हियर द फेसबुक एंड देन यहाँ पर एट्रीब्यूट लगा देंगे एरिया हिडन, ट्रू कर देते हैं। तो यहाँ क्लोज कर देते हैं। इसी के साथ साथ गाइज अगैन आपने सेम मेथड ओपन करना है। जितनी भी आप सोशल मीडिया आइकन देना चाहते हैं कॉपी कर दें, Ctrl+V फॉर पेस्ट। अब यहाँ पर फेसबुक की जगह वी आर गोइंग टू राइट इट हियर द ट्विटर। ओके, इसी के साथ क्रिएट हियर अनदर एंकर टैग। अब जितनी भी सोशल मीडिया आइकन्स आप क्रिएट करना चाहते हैं 1 by 1 आप सिर्फ यहाँ पर क्लास ऐड करते जाएं और वो सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पर क्रिएट होते जाएंगे। सो इट्स अ वेरी ईजीएस्ट मेथड इफ़ यू वांट टू क्रिएट मोर दैन। सो यहाँ पर हम इंस्टाग्राम ले लेते हैं और लास्ट ऑन द लिस्ट वी आर गोइंग टू टेक हियर द यूट्यूब लिंक। यहाँ पर FA यूट्यूब प्ले, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने सारे आइकन्स ले लिए गाइस और अब सिंपल आप 3 डिप्स से बाहर आ जाएंगे 1 2 3। ये डिप्स का बहुत ख्याल रखना, अदरवाइज़ यू आर गोइंग टू स्टक और फिर बहुत मसला हो जाएगा। अब सिमिलर सेम यही काम करना है, इन सबको कॉपी करना है आपने। जहाँ से आपने कॉलम की क्लास ऐड करना शुरू करी थी वहाँ से आप मल्टीपल टीम्स के ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है जी। सिंपल यहाँ से इसको कॉपी करेंगे आप एंड देन इफ़ यू वांट टू रिक्वायर हाउ मेनी टीम मेंबर्स फिर आप उसके हिसाब से 1 by 1 इसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ। तो यहाँ ले जाके हम स्पेस के साथ इसको पेस्ट कर देंगे। 2 हो गया। इसी के साथ अगेन 3 4। तो यहाँ पर गाइज क्लियरली हमने जो है वो मेथड जो है वो क्लोज कर दिया है। सो अब हम सिंपल इनके नेम चेंज करते हैं एंड देन पिक्चर गेट करेंगे और CSS की सेटिंग प्रोवाइड करेंगे और फिर इसका फाइनल रिजल्ट लिखेंगे कि व्हाट आर द रिजल्ट। तो यहाँ पर मैं इनके नेम चेंज कर देती हूँ। ओके, हेयर इज चेंज,
So here is the James Matthew. Here is the advertising had. You know very well there are so many different departments in the corporation. So here is the William Matthew financial head. And then last on the least, we are going to create here Stella Ramzan. Okay. मीडिया हेड. ओके फाइन. सो यहाँ तक हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है गाइस. इसके बाद वी गोइंग टू क्रिएट हेयर द क्लाइंट सेक्शन. तो फिलहाल हम यहाँ पर कमेंट पास कर देते हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर प्रोवाइडिंग द CSS. तो यहाँ पर मैं क्लाइंट सेक्शन को मार्क कर देती हूँ. ठीक है जी. ओके, नाउ बैक ऑन दी CSS पर आते हैं. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग अबाउट. So here is our CSS. Okay. So यहाँ पर भी obviously आपने कमेंट पास करना है ताकि आपको याद रहे. We're going to provide some changes. Easily you can provide it here. So here is the team section. So सबसे पहले टीम सेक्शन की क्लास बना लेते हैं. Implement here the text align centered. So implement here the background color. So here is a color. Okay, move on the next. Implement here the font color, become white. Okay, move on the next settings. So here is the theme section, then heading container. Okay, so implement here the padding. सबसे पहले तो मैं यहाँ पर WebKit box implement कर देती हूँ. WebKit box pack centered. After that we are going to implement the MS Flex pack. And then here is the justify content. Here is implement the center. Okay, move on the next. So here is the team section and then team container. So implement here the padding. Zero and then 15px. Move on the next. Team section, then team container, and then box. So here is implement here the padding first. 35px overall. बाकी का जो criteria है we are going to implement here 0. Implement here the border radius is 5px. Overflow is hidden. So WebKit transition. I think 0.1 seconds रखते हैं. Okay, and again implement here the transition again. All 0.1 seconds. So here is the margin top.
45px. Implement here the background. So WebKit gradient, implement here the linear effect. Linear, left, top, and then left, bottom. So provide here the color. So here is the color combination we are going to implement. So I just write it here the from and then to. Okay, they are the combo of two colors we're going to implement here. So I wanna close this statement. Move on the next, implement here the background, linear gradient to bottom, hash, comma, then. Okay, now close this here. Move on the next class is a team section and team container, then box, image box. Okay, now clear this. So यहाँ पर भी guys again display पर आ जाते हैं, then आपको पता हो कि WebKit display हमने implement किया है. First one is the WebKit box, again display पर आ जाता है, and then MS Flex box, and then implement here the last display. Here is the flex. After that, WebKit pack box. Here is the box pack. Implement here again the center. Again MS Flex pack, centered, and then justify content as well as centered. So here is the WebKit box, align, centered, MS Flex align, centered, and then align item as well as centered. So here is the next team section, team container. Implement here the box, again the box image, image box, sorry. इसी के साथ साथ जो हमने पिक्चर लेनी है उसकी सेटिंग्स इम्प्लीमेंट कर देते हैं. विद इज 120px. implement here the border radius 100%. After that, implement here the border. We are going to take it here the 5px solid, and here is white. Okay, move on the next. Move on the team section, team container, then box, and then detail box पर आ जाता है. So यहाँ पर guys simple हम margin implement कर देते हैं. It become a 25px and after that 0. So again move करते हैं. बॉक्स के बाद we are going to implement here the social box हमने create किया है.
सोशल बॉक्स के अंदर सबसे पहले गाइस बल्कि मैं काम करती हूँ यहाँ पर आई थिंक मैंने एक H1 भी लिया था, उसकी भी एक क्लास बना लेती हूँ यहीं पर ही। यूएन डिटेल बॉक्स के अंदर H5 लिया था, पहले मैं H5 को क्लियर कर देती हूँ। गोइंग सम सेटिंग्स हेयर, सबसे पहले फॉन्ट कलर इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, आफ्टर दैट द फॉन्ट वेटेड is bold, और पोजीशन को guys we are going to take it here the relative. Okay, move on the next social icons, और यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी है social icons, तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले guys padding इम्प्लीमेंट करेंगे among all the icons. So 10 px, 45 px, 20 px, and then we are going to take, if we want to give some changes, तो वो इन दी एंड में ऑब्वियसली हम कर देंगे जिस तरह से हम पहले करते आए हैं। Here is the display, MS flags, display, WebKit box, and again display. Here is the flags. ठीक है जी, move on the next. So here is the WebKit box pack, justify, again MS flags pack, justify, and then justify content, space between. Okay, move on the next. Right here some tab like that in a sequence manner. Okay जी, इसी के साथ साथ गाइस हमने जो एंकर टैग लिया था, so again we are going to create the class same section, ऊपर की सेम क्लास है team container, then box, then social box. So here simple, here the anchor tag. So here is the font color, become white. So implement here the font size is 22 px. So move on the next class. Here is a team section, team container, box, then social, color, okay, बल्कि मैं need this one. Okay, so simple guys, the pictures का link provide करते हैं one by one, and then we are going to see the final result. So get here some random links, और simple कुछ links copy कर लेते हैं यहाँ से picture के, like this one, copy image link, और simple अपने section में ले जाके we are going to implement. So हमने तकरीबन 4 लिए थे. First one is here. So यहाँ पर जस्ट मैं लिंक को Ctrl V से पेस्ट कर रही हूँ. ओके जी, नेक्स्ट ऑन. So here is the next one. Okay, James Matthew, यहाँ पर हमें पिक्चर कॉपी करनी है. So again go back and get another link. तो फ़िलहाल पहले मैं वुमेंस की पिक्चर ऐड कर देती हूँ,
then page we are going to write it here the mail. Okay, here is the copy image link again, and then back to here, so paste it here. Okay, move on the next. So here is the man images. So हमने सिर्फ 5 कार्ड्स क्रिएट किए हैं गाइस. इफ़ यू वांट टू क्रिएट मोर देन 5, सो आप आसानी से और भी बना सकते हैं. जितना स्पेस है उतना ही आपने टीम मेंबर्स क्रिएट करने हैं. And the fourth one is okay. सो हमने पिक्चर्स प्लेस आउट कर लिए गए. जब हम आपको इन सब का प्रीव्यू चेक कराते हैं, सो व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट दे आर डिस्प्लेइंग. ओके, सिंपल प्रीव्यू पे जाते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू रन दिस. सो क्रिप्टो की वेबसाइट आपके सामने लोड हो गई है और यहाँ तक लास्ट ऑन रिलीज आर थीम. थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ाते हैं, हाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कंजस्टेड लग रहा है. सो गाइस कम बैक हेयर, और सॉरी वी आर गोइंग टू फॉरगेट गिव हियर द हाइट. मैं यहाँ पर 120px राइट डाउन कर देती हूँ. सो सी द रिजल्ट हेयर. ग्रीन कलर हमने फिल किया था. तरीके से सोशल मीडिया आइकन्स भी आपके वर्क कर रहे हैं कम्प्लीटली. और इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द साइज, आप इंक्रीज इसका अपने हिसाब से साइज इंक्रीज कर सकते हैं. सो अवर टीम के बाद गाइस मूव ऑन द क्लाइंट सेक्शन. अगेन बैक टू HTML and then we are going to implement here the client section. Okay, let's start. So move on the next. So client section पे सबसे पहले section create करेंगे guys हम. So create here the class of section. So here is the client section class. Okay. So again implement here the layout padding. सो आपने यहाँ पर 2 क्लासेस पास कर ली हैं. अब इसी के अंदर गाइस अब आप आ जाएँ कंटेनर क्लब के ऊपर. तो इस सेक्शन के अंदर ही आते हुए गोइंग टू क्रिएट हियर द कंटेनर क्लास. सो क्लाइंट के बाद वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर सेक्शन इज हेडिंग कंटेनर. तो यहाँ पर अगैन वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द हेडिंग. sorry I'm gonna close here the caps lock. So here is the heading container. इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हेयर दी हेडिंग सेंटर. सूडो क्लास इम्प्लीमेंट करेंगे. यहाँ मैं क्लास बना रही हूँ सूडो वाइट प्राइमरी. ओके, और इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द मार्जिन बॉटम इट्स 45. सो इसी को भी नीचे लेके चले जाते हैं और इसके अंदर सिंपल H2 इम्प्लीमेंट कर देंगे गाइस. ओके, so write it here some tags. What says our here is take this pan tag our clients. सेक्शन के बाद H2 और डिप से दोनों से बाहर आ जाएंगे एंड देन क्रिएट हियर द. अभी यहाँ पर गाइस आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में एक ओवल कैरोसेल लिया था.
तो हम उसको यहाँ पर रैप करा देंगे। ओके, या मैंने क्लास बना ली है कैरोसेल की, एंड देन इम्प्लीमेंट हियर सम another classes. So here is the oval, carousel, and client या customer, whatever you want. Client oval, then carousel. बल्कि मैं काम करती हूँ, मैं सिंपल ओवल कैरोसेल की क्लास ही बना लेती हूँ। ओके, इसके अंदर फिर हम क्रिएट कर देते हैं एक तो क्लाइंट, क्लाइंट ओवल कैरोसेल, कैरोसेल। अगेन गाइस, इसका डिव भी आप नीचे ले जाएंगे, क्रिएट हियर द आइटम क्लास, create here the box class, so image box class, and take it here the image source, alter, and then class box image. Okay, same like that, close here और उस div से बाहर आ जाएंगे guys again, and then वही same procedure detail box, so detail box के अंदर guys we are going to create here the client ID, so create here the client ID class. After that, implement here the client info, so here is the h6, Saram. Here is the create here the paragraph, कोई भी comment whatever randomly अब हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे, एंड देन इसके डिव से बाहर आ जाएंगे, क्रिएट हियर द आइकन। तो मैं आइकन की क्लास बना लेती हूँ यहाँ पर, क्लास, we are going to implement here the quotation mark on the left, ठीक है, and then again implement here the attribute, area, and then not the true, not default, here is the true, okay. Now again move on the div, here is a paragraph, whatever, if you want to provide some good comments here तो आप कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद guys we are going to back here 1 2 and 3, after 3 divs आपने बाहर आना है, and then you can create here the item class. divs अगर overlapping होते हैं तो obviously रिजल्ट वो नहीं आएगा जो कि आप रिक्वाइर कर रहे हैं। मैंने बहुत दफ़ा बताया कि ओवरलैपिंग ना हो। इसी के साथ साथ इमेज बॉक्स and again image source, alter, and then create here the class box image. I close it here, again div से बाहर आ जाएंगे, and then create here the class, here is a detail box, ओके। इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हेयर अनदर द क्लाइंट आईडी, फिर वो सारा प्रोसीजर चल रहा था वही चलता रहेगा, क्लाइंट इन्फो, क्लाइंट आईडी।
सो सेम प्रोसीजर आप यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। फिलहाल मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। सो यहाँ पर अगेन क्रिएट हियर द क्लास ऑफ क्लाइंट आईडी। Here is the class info, client info. Here is the HSEX. So again you can write it here, the name. Zenberg. So simple here, take here the some paragraph in the end we are going to take. So कोई भी client के बारे में whatever you want तो वो यहाँ पर आप write down कर सकते हैं। इसी के साथ साथ again quotation आ जाएगी। Okay, and then you can write it here the class quotation quite mark मुझे रखना है, not the quotation, sorry. So attribute here the area hidden run through. So again I can say आप div से बाहर आ जाएंगे and then implement here the paragraph. So paragraph में if you want to write any paragraph आप आराम से यहाँ पर write down कर सकते हैं and then again 3 div से आप बाहर आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर फिर वही आइटम से आपने कॉपी करना है। सेम अगेन कॉपी कर लेते हैं गाइस and then implement here the paste. That is the paste. सो सिंपल यहाँ तक हमारा क्लाइंट का सेक्शन एंड हो गया। इसके बाद ही गाइस हम इन्फो सेक्शन भी ऐसी यहीं पर ही क्रिएट करके फिनिश कर देते हैं ताकि हम साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन कर लें और हम फाइनल व्यू आपको आज ही ट्यूटोरियल में फाइनलाइज कर दें। सो यहाँ पर गाइस मैं इन्फो सेक्शन क्रिएट कर लेती हूँ जल्दी से। ओके, सो हियर इज़ इन्फो सेक्शन। सिमिलर वे के अंदर वही जितना भी काम अभी तक किया है सेक्शन के ऊपर अगेन वही सेक्शन क्रिएट करने हैं आपने। सेक्शन के अंदर क्रिएट हियर दी क्लासेस। सो क्लास का नाम गाइस अगेन इन्फो सेक्शन होगा क्योंकि हम अब सेक्शन पे काम कर रहे हैं। सो लेआउट पैडिंग अपने हिसाब से सेट हुई हुई है सबकी तो वो आपने यहाँ पर दे देनी है। यहाँ पर लेआउट पैडिंग 2 कॉल करेंगे आप। ओके, हियर इज नेक्स्ट implement here the container class. Implement here the row, cell, column, medium, sex. इसी के साथ साथ अगेन कॉलम लार्ज 3 एंटर कर देंगे एंड देन इम्प्लीमेंट हेयर सॉरी चलो मैं यहाँ से कोटेड रिमूव कर देती हूँ। आई जस्ट इम्प्लीमेंट हेयर। ओके, इसी के साथ साथ गाइज इन्फो कॉलम की भी मैं एक क्लास इधर ही कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके, इम्प्लीमेंट हेयर द इंटर। सो नाउ यू कैन क्रिएट हेयर द इन्फो contact class. Here is the h4 for if you want to ask about the addresses. इसी के साथ साथ h4 के बाद you can create here the enter. So create here another div और यहाँ पर मैं just contact link box की class बना लेती हूँ and here is the anchor tag और anchor tag को फिलहाल empty रखेंगे। take here the icon for icon class. so ज़रा जल्दी वाइंड अप करते हैं ताकि आज का ट्यूटोरियल लिमिटेड रहे। okay, map and then marker. So again here is the area hidden is true. Okay, so here is icon close. Take here after icon you can take the span tag or span tag के अंदर you can write it here the location.
सॉरी, कैप्स लॉक बंद कर देते हैं. सो हियर इज़ एंकर टैग क्लोज कर देंगे आप. एंड देन अगैन यू कैन इम्प्लीमेंट सेम प्रोसीजर. देन फिर अब ये फ़ोन नंबर का आइकन आ जाएगा. तो सिंपल मैं एंकर टैग से एंकर टैग तक कॉपी कर लेती हूँ. Ctrl+C, Ctrl+V. और यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजेस. यहाँ पर मुझे फ़ोन लेना पड़ेगा, FA, बिकॉज आई रिक्वायर्ड अ फ़ोन आइकन. इसी के साथ साथ यहाँ पर राइट इट हियर द एनी रैंडमली नंबर. Okay, I just write it here, the random number. I just mark here call on this. So इसी के साथ अगेन एंकर टैग से बाहर आते हैं. अब ईमेल एड्रेस यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा. Here is the envelope. Okay, and then लोकेशन की जगह cryptocurrency@gmail.com, and then implement here again. So anchor tag के बाद guys you can out from the two divs. इसी के साथ create here the again class info social. So implement here the social media icons. Info social. Again implement here the anchor tag. So anchor tag के अंदर guys we are going to implement here the empty. Implement here the I class. अब यहाँ पर सारे आइकन जो भी आप सोशल मीडिया के आइकन्स हैं we can implement here the one by one. Facebook, and then it's not a mandatory if you want to implement this attribute. तो डिपेंड करता है, अगर आप नहीं करना चाहते इट्स नॉट मैंडेटरी, अदरवाइज ये ट्रू ही रहता है. तो सिंपल एंकर टैग को कॉपी करते हैं and then provide here some social medias icon. So here is a Twitter. So LinkedIn. So here is the Instagram. Okay, now here is close. Okay, you can out from the two divs. Here is class again. Column medium 6. So here is another column large 3, info column. So here is another class. Here is the info detail. H4 में you can write it here the info. So after that create here the paragraph. Whatever if you want to give any information related to paragraph you can provide it here. So after that the two paragraph, create here another class, column medium 6, column
large 2, margin on x-axis is auto, so इसी के साथ साथ info column. Here is the class. You can create another. So info link box. Now links. Create here another info link class. Where is the anchor tag? So anchor tag के अंदर भी we are going to create the class. Here's active. So यहाँ पर guys implement here the Azure reference. अब जो भी पेज कॉल कराना होगा उसका लिंक हम यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे और यहाँ पर मैं इसके दरमियान में सॉरी जस्ट राइट इट हियर द होम. ठीक है जी. सो नाउ क्लोज इट हियर द एंकर टैग. इसी तरीके से यू कैन मेक अ मल्टीपल एंकर टैग अबाउट. कॉपी हियर. पहला वाला एक्टिव होगा, बाकी आप एक्टिव नहीं रखेंगे. सो एक्टिव बाकी को एम्प्टी कर देंगे आप. लाइक इन दिस वे ऑन द ईजीएस्ट. अच्छा, होम के बाद यहाँ पर आप अबाउट. आई थिंक पहले हमने नॉट इम्प्लीमेंट हियर द अबाउट. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर द सर्विसेज. देन आफ्टर अबाउट after that we are going to implement the why. So here last on the list is a theme. So active से इसको हटाना है. So again 3 div से बाहर आ जाएंगे. तो यहाँ पर again create here another class. It's column medium 6. इसी के अंदर implement here the column large 3 and then you can write it here again info column h4. So here is the subscribe. सो यहाँ पर गाइस हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम डिटेल्स वगैरह गेट कर लेंगे. फॉर्म के अंदर इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट एक्शन, क्योंकि अभी हमने कोई पीएचपी कनेक्ट नहीं करनी है इसमें, तो सिंपल हम एक्शन की जगह पर हैश रिक्वाइट कर देते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले इनपुट. सो यहाँ पर मैं आई जस्ट राइट इट हियर द प्लेस होल्डर. email. Now I close this. इसी के साथ साथ create here the submit. So the button. Type is submit. ठीक है जी. इसके बीच में you can write it here the subscribe. So फॉर्म क्लोज हो गया है एंड दैन अगेन आपने सेक्शन को क्लोज करना और सेक्शन से बाहर आ जाना. लास्ट ऑन द लीज गाइस हमारे पास सिर्फ छोटा सा फूटर रह गया है. सो इसी को भी अभी ही कंप्लीट करके हम इसको
फुलफिल कर देते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू वर्किंग ऑन द फूटर. सो फूटर में जस्ट सिंपल कुछ ख़ास नहीं है, सेक्शन बनाने हैं. ना कोई लंबा चौड़ा फूटर नहीं है, जस्ट कॉपीराइट रिजर्व राइट डाउन करेंगे. क्लासेस footer section. Again create here the container class. After that the paragraph implement here. So write it here the copyright. So here is this pen. यहाँ पर हम एक आईडी लेंगे डिस्प्ले एयर की, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में इसको जो भी एयर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा. एयर इज ऑल राइट रिजर्व्ड बाय. आई थिंक ऑल राइट रिजर्व इज़ क्वाइट ओके. इसी के साथ साथ सिंपल आप यहाँ पर एंकर टैग प्रोवाइड कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू गिव एनी सोर्स, डिपेंड करता है, अदरवाइज़ नहीं देना. इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू. बस इतना काफ़ी है गाइस आज के लिए. सो मूव ऑन दी CSS. अब CSS को कंप्लीट करते हैं और हमने भी सबसे पहले क्लाइंट पे काम करना है. तो टीम के बाद गाइस वी आर गोइंग टू पास हियर द कमेंट अबाउट क्लाइंट. ओके, मैंने पहले भी बताया था इट्स वेरी मैंडेटरी. इफ़ यू नॉट पास द कमेंट फिर आपको सर्च करने में बहुत मसला होता है. सो हियर इज़ द क्लाइंट. सबसे पहले आता है क्लाइंट सेक्शन पे. उसके बाद हेडिंग कंटेनर. implement here the margin bottom. It's 30 px. ठीक है जी, move on the next. Then client section again. इसी के साथ साथ we are going to create the box. सबसे पहले again display WebKit box, MS flags, and again displays flags. After that implement here the WebKit box. WebKit box orient is a vertical. इसी के साथ साथ WebKit box direction is normal. MS flags direction again column. So last on the list is a flag direction, again column. इसी के साथ साथ implement here the margin. Margin 15 px. So now move on the next. Here is the client. Client section, then box, and then image box. Implement here the position is relative. After that implement here the display is WebKit box, and again display is MS flags box. Last on the list display is flags. Okay, after that again here is the WebKit box pack, centered, and then MS flags, MS flags pack,
So here is MS Flex Pack again. Implement here the centered, and then justify content as well as centered. Implement here the WebKit, box align, centered, and then MS Flex. MS Flex align as well as centered, and implement here the line item as well as centered. Okay, move on the next. इसी के साथ साथ implement here the width is 100%. Implement here the margin bottom minus 50px. After that, margin left is 25px. Position is relative. Move on the next. So here is the client section. Box, and then image box, image. So implement here the border radius is 100%. Move on the client. Client section, then box, then client ID. हमने क्लास बनाई थी इसकी. So again implement here the same procedure है guys जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, और same वही display के method है. Last on the list display is flags, and again WebKit. Justify. Implement here the justify, and then implement here the justify content is provide here the space between among all the client bars. Move on the next. Here is the client section. So here is the client section. Implement here the box, then client ID, then implement here the client info. Where is the client info? And then H6. So implement here the font weighted. Thickness आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, depend on you. I just take here the 400. हाँ थोड़ा कम हो जाएगा, इसको 600 कर देते हैं. इसी के साथ साथ मार्जिन बॉटम रख देते हैं 5px. Okay, move on the next. Then client section, then box, then client ID, then client info, and then paragraph here. Move on the margin bottom, video, font size 15px. So after that implement here the margin bottom, so margin $10px. Okay, now move on the next. So here is the client section again.
and detail box. So implement here the background color is white. After that, WebKit box shadow. So here is the 0. So again implement here the 15px and then 0. Implement here the RGB color. So I just write here the code. Opacity implement करनी है, that's why. इसी के साथ साथ implement here the box shadow. Same procedure. So implement here the padding. 25px, then 25px. So implement here again the 25px, and last one is also 25px. Okay, move on the next class. It's a client section, then box, एंड दैन डिटेल बॉक्स के अंदर जो हमने आई की क्लासेस बनाई है जिसमें हमने आइकन गेट किए हैं उसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे. कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं. आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट योर द मार्जिन बॉटम. मैंने पूरी एप्लीकेशन के अंदर आपने देखा होगा गाइस कि मैंने मोस्टली 2 ही कलर यूटिलाइज़ किए हैं. ज़्यादातर ब्लैक और वाइट है. इसके अलावा मैंने कलर कॉम्बिनेशन ली है उसी के हवाले से ही मैंने क्लास को पूरा क्रिएट किया है. सो हियर इज़ द ओवल कैरोसेल. सो हियर इज़ टेक द ओवल नैव बार. अभी सवाल आपके माइंड में आ सकता है कि नैव बार तो हमने क्रिएट नहीं करी है, बट हमने जो लिंक लिया है CDN जो हमने इंटरनेट से कॉपी किया था, ऑब्वियसली उसमें कुछ क्लासेस हैं जिनमें हम अपनी क्लासेस को मर्ज करना चाह रहे हैं. सो दैट्स वाई हम थोड़ी सी सेटिंग उसके हवाले से करेंगे. डिस्प्ले इज़ WebKit बॉक्स. अगेन डिस्प्ले इज़ MS flags. So move on the WebKit box pack. Centered, and again MS flags pack is centered, and implement here. So justify content centered, and the margin top is 45px. Move on. The next class is a client section again. So here is the oval carousel. So again oval nav. जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि ये क्लासेस हैं ये ऑलरेडी प्री डिज़ाइन है जो कि आपने क्लासेस ली है प्रीवियस. अगेन सेम क्लास रहेगी, बस सिर्फ नेक्स्ट जो आपने CDN कॉपी किया उसमें ऑलरेडी एक क्लास बनी हुई है जो कि हम इनके इम्प्लीमेंट खुद से अपनी सेटिंग से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने क्राइटेरिया के हिसाब से सेटिंग रिक्वायर्ड है. अदरवाइज़ ये CDN लिंक के अंदर ऑलरेडी डिज़ाइन हुई हुई है.
implement here the background color is white and the color is black. So your bottom is 0px. And after that, implement here the font size, taking here the 24px. So again implement the shadow हमने obviously ऊपर दिया, उसी को कॉपी कर लेते हैं. यहाँ से हमने shadow को कॉपी कर लेते हैं. So paste it here. Same वही रहेगा, बस थोड़ा बहुत criteria change करना है. जहाँ 15 दिया वहाँ 5 कर देते हैं. That's it. And same like that, opacity का criteria भी 25 पे ले जाते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं. Okay, move on the next class. बहुत इंटरेस्टिंग सा एक ओवल स्लाइडर बनकर आएगा जिसके ज़रिए बहुत इफेक्टिव वे के अंदर अपने कमेंट्स को प्लेस आउट कर सकते हैं. एक तरह का कार्ड इफेक्ट भी है, अगर आप चाहें तो आप उसको ऐसा कार्ड भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Implement here the hover effect. When you hover your mouse, सेम यही क्लास उठा लेंगे, बस सिंपल नेक्स्ट कर देंगे. सो यहाँ पर मैं प्रीवियस की जगह पे नेक्स्ट कर देती हूँ. So move on the next. Here is the color combination implement. Okay. So यहाँ पर क्लाइंट का सेक्शन ख़त्म हो गया. अब हम यहाँ पर इन्फो का सेक्शन इम्प्लीमेंट कर देते हैं और इन दी एंड पिक्चर्स इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन सम टैक्सेस. So here is the info section. So here is info section. सबसे पहला implement here the background color. This one. Moving on the next, implement here the font color is white. After that, implement here some padding, 45px, then 0, 15px, then 0. Move on the next. Info section, heading 4. So यहाँ पर again font weighted is 600. Margin bottom guys हम यहाँ पर 20px रख देते हैं. After that, implement here info section and then info column. So implement here the margin bottom is 30px. Info section, then हमने एक info contact की भी class बनाई थी. Here is the info contact and then contact link. हमारा लास्ट क्राइटेरिया ही चल रहा है गाइस. इसके बाद we are going to share the final result, complete website, और इस तरीके से हम और वेबसाइट आप लोगों के लिए क्रिएट करते रहेंगे. सो मेरी कम्प्लीटली कोशिश है कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स और बहुत इंटरेस्टिंग सी हो ताकि आप आसानी से बना सकें. Vertical, move on the next.
WebKit box direction is normal, and then MS flags direction is column, and implement here the flags direction is column. Okay, move on the next. Info section, then info contact, then contact link, link box, and then anchor. Here is the margin 5px, then 0. Implement here the color, become white. So move on the next. Again here is यहाँ पर again info section में margin implement कर देते हैं. Then info contact, so here is the contact link, anchor, and I for icon. Do you remember? So यहाँ पर margin right हम रख देते हैं. कोई भी changes करनी हो, in the end we are going to change some things. अगर हमारा result in correct way के अंदर नहीं आया तो obviously हम change कर सकते हैं. Don't be worry about that. तो इसी क्लास के ऊपर मुझे एक होवर इफेक्ट इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं जैसे इसी को कॉपी कर रही हूँ. एंड देन एंकर के बाद आई जस्ट राइट इट हियर द सूडो क्लास होवर, एंड देन यहाँ पर जो फॉन्ट कलर है उसको हम चेंज कर देते हैं, जो कि हमारा मैंडेटरी कलर है स्टिल. ओके, तो यहाँ पर अब सोशल्स पर आ जाते हैं. सो इन्फो सेक्शंस में आपने इन्फो सोशल्स क्रिएट किए हैं. ओके, सबसे पहले अगैन डिस्प्ले WebKit box, then display MS flags, and then again displays flags. After that margin top is 20px और margin bottom को I think 10 रख देते हैं. 20. Okay, on the next info section, info social, implement here the anchor tag. So again display WebKit box, MS flags box, and then you can write it here, the display is flags. Then WebKit box pack centered, MS flags pack centered, and then justify content is centered. So here is the WebKit box align, center, and again MS flags align is also a center, और इसी के साथ साथ align item भी हम center कर देंगे. And after that implement here the color, become white. It's a font color. So implement here the border radius, it's 100% in a rounded way, and then implement here the margin right, 10px,
and the font sizes we are going to take here 24 px. Okay, move on the next. अभी यहाँ पर same class पे we are going to implement the hover effect. So here is info section, info social, anchor hover. So here is the color. Okay. So अब आते हैं इस links पे. Here is the section, sorry, info section. After that, implement here the info links. Okay. So again, implement here the display, AppKit box. So again, display MS Flex. इसी के साथ साथ we are going to take here the simple display is a flex. After that, we are going to take so इसी के साथ साथ move on the next, the WebKit. So यहाँ पर again we are going to take here the box. So WebKit, box align as well as centered. इसी के साथ साथ MS Flex align as well as centered. Now last on the list is align item. भी हम center में ही hold कर देंगे. इसी के साथ साथ we are going to here the margin bottom. It's 15 px. After that, we are going to implement here the color is white. Okay, move on the next. Simple अब info पे guys हम लोग जो है वो so complete करने के बाद we are going to implement some pictures. So next class is info section. इसी के साथ साथ info link. So here is the info links, and after that anchor anchor tag के साथ we are going to implement here hover. So we are going to implement here the pseudo class is hover. Now implement here the font color, it's become blue. The next class is info section. And then implement here the form. So form के अंदर जो हमने input बनाए थे उसको यहाँ पर कॉल कर देंगे. सबसे पहले गाइस border by default जो होता है उसको हम यहाँ पर डन कर देंगे. After that implement here the border bottom. So we are going to implement here the border bottom. So we are going to implement 1 px and solid. Implement here the white color. So here is the background color. So transparent रखेंगे background को. After that implement here the white width is 100%. Okay. After that implement here the outline. It's done. जो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट बने हुए आते हैं हमने उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया है cause we never required the by default, that's why. और इसी के साथ साथ again you can click here the info selection. So after that the form input.
and then move on the. So here is again the WebKit input placeholder like this one. So implement here the pseudo class. So color become white. So again implement here the info selection. So implement here the form. So input. So यहाँ पर MS Flex ले लेंगे guys हम यहाँ पर. So MS Flex, sorry बल्कि MS input लेना था, not the flex. MS input placeholder, and then again implement here. So यहाँ पर मैं implement कर देती हूँ again the font color. It's white ही रख लेते हैं, ठीक है जी. Okay, move on the next. So again info selection, form, input. So again MS input placeholder right here. Placeholder. So again implement here the white color. Okay, move on the next. So again info section, form, input, placeholder. So color here white. Move on the next. Info section, form, then button. So after that implement here the width. It's here the 100%. इसी के साथ साथ टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कर देते हैं इन द सेंटर्ड डिस्प्ले inline block. So implement here the padding 10px and then 55px. So implement here the background color, then the font color. Obviously white combination हमारा स्टार्टिंग से गाइस वही चल रहा है जो कि हमने स्टार्ट लिया था, जो कलर कॉम्बिनेशन हमने डिसाइड किए थे. So इसी के साथ साथ implement here the WebKit transaction. WebKit transition all again 0.3 seconds अभी तक हम लेते आए हैं, and then simple here the transition all 0.3 seconds. So border here is none. So the margin top is 15px. So move on the next. Implement here some hover. So here is the info section. So फॉर्म पे हमने जो बटन्स लिए हैं, we are going to implement here the hover effect. So again background color हम change कर देते हैं इसका this one. Okay, this one.
ओके जी, मूव ऑन द नेक्स्ट। अब यहाँ पर गाइस अब हम आते हैं फूटर सेटिंग्स पर। सो ऑब्वियसली पास हियर सब कमेंट्स। सो सिंपल आप जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। सो फूटर पर फूटर सेक्शन जावास्क्रिप्ट के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर सब मीडिया क्वेरीज। कुछ रेलिवेंट क्राइटेरिया जो है उसको हमें एडजस्ट करना है। सो बैकग्राउंड कलर इज़ वाइट। आफ्टर दैट द टेक्स्ट अलाइन सेंटर्ड। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। फूटर पर आ जाते हैं। फूटर सेक्शन देन पैराग्राफ। सो इम्प्लीमेंट हियर द कलर। Here is the color. So padding is 25 px then 0. After here the margin as well as 0. Okay, इसी के साथ साथ फूटर पर आ जाते हैं और फूटर सेक्शन पे हमने पैराग्राफ और एंकर टैग्स लिए थे, उनके ऊपर सेटिंग अपनी कर देते हैं। सिंपल कलर जो है इनहेरिट कर देते हैं। ओके जी, सो यहाँ पर गाइस हमारा जो कंप्लीट वर्क है इज़ फिनिश। सो गाइस यहाँ तक हमारा डिज़ाइन हुआ है, हम इसको रन करा दें पहले, उसके बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट राइट डाउन करें। क्योंकि जो स्लाइडर हमने ओवल लिया है ऑब्वियसली अगर हम पिक्चर्स उस पर इम्प्लीमेंट कर भी देते हैं तो वो इसलिए भी रन नहीं होगा क्योंकि आपके पास जो है वो इसका बैकअप क्राइटेरिया नहीं है। तो लाजमी सी बात है कि हमें उसके जावास्क्रिप्ट राइट डाउन करनी पड़ेगी, कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, तो ये हमारे पास जो है वो कस्टमर का क्राइटेरिया बनकर आ जाएगा जो कि अभी एम्प्टी है। यहाँ तक हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। सो सिंपल गाइज, अब हम आते हैं और हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को राइट डाउन करते हैं। ठीक है जी, सो बैक ऑन दी जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले अच्छा डिपेंड करता है, इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट द मीडिया क्वेरीज तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट अ मैंडेटरी फ़िलहाल। लेकिन जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने कंप्लीट करना है। ऑन दी टू वर्ड जावास्क्रिप्ट, सो फंक्शंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले गेट, यार इसके ज़रिए आप एयर गेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं फंक्शन राइट डाउन कर देती हूँ। जस्ट क्लोज द कैप्स लॉक, गेट एयर and then create here the function. So variable current date at classes create कर functions create कर लेते हैं। So now move on the next variable current year equals to new। आई थिंक यहाँ पर करंट डेट लिख लेते हैं। डॉट गेट फुल एयर। तो जो भी एयर होगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली उस एयर के अंदर अपडेट हो जाएगा। सो डॉक्यूमेंट, आपकी वेबसाइट जिस भी एयर के अंदर रन हो रही होगी वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेगा। क्वेरी सेलेक्टर, so here is the display air id। after that dot inner html equals to current air। ठीक है जी, तो कॉल हियर द फंक्शन जो कि आपने बना दिया ऊपर गेट एयर। इसके बगैर फंक्शन के बगैर ये कॉल नहीं होगा। सो यहाँ पर जो हमने क्लाइंट सेक्शन बनाया था उसको यहाँ पर हमें कमेंट पास करना है इसका कुछ। सो फ्यू सेटिंग्स गाइस हम यहाँ पर ओवल की इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ कुछ कनेक्शंस क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्लाइंट रिमेंबर करें हमने क्लास बनाई थी ओवल कैरोसोल के नाम से। सो मैं ओवल कैरोसोल को यहाँ कॉल कर लूँगी। सेम प्रोसीजर के हिसाब से कॉल करना होगा आपने। और हेयर इज़ द ओवल carousel। Okay, now we are going to begin the function। so यहाँ पर सबसे पहले हमें लूप राइट डाउन करना है जिसको हम ट्रू रखेंगे।
इसी के साथ साथ ये आप इसकी वेबसाइट से भी कॉपी कर सकते हैं प्रोसीजर, अदरवाइज़ सिंपल आप लिखना चाहें तो भी। कुछ सेटिंग्स करनी थी इसलिए मुझे लिखना पड़ा इसको। सो अगर आप कम्प्लीटली वहाँ से भी पिक करेंगे तो सेम प्रोसीजर आपको ओवल कैरोसेल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो here the some procedures, नेविगेशन मुझे चाहिए इसमें नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन्स के लिए। nav tags, so here is close. After that the autoplay, equals to true, and then autoplay hover, then pause की एक सेटिंग्स है, तो इसको हम शुरू कर देते हैं। एंड आफ्टर ऑन दी nav tags के अंदर ये प्रोसीजर हमें रन कराना है। सो आई now close this I here. Okay, create here the class equals to आपको मुझे यहाँ पर लेफ़्ट एंड राइट के एंगल्स बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लास को राइट डाउन कर देती हूँ। लेफ़्ट, so the area header is true, true। ठीक है जी। इसी तरीके से दूसरा वाला अब जो है वो राइट होगा। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ऑब्वियसली रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। इसी को कॉपी कर लेते हैं कम्प्लीटली। was we required to left and right icon here, so सेम प्रोसीजर रहेगा, बस सिर्फ यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, एरर आ रहा है। ओ सॉरी, हम यहाँ पर कॉमा देना भूल गए थे। ओके, so here is the close, responsive, again here is 0, so here is the item 1, बल्कि मैं इसको आइटम्स करूँगी। $600 के ऊपर डिस्प्ले कौन सा होगा? आइटम जो भी व्हाटएवर आइटम 2 होगा। एंड देन 1000 पे we also provide here item 2। ठीक है गाइज, सो यहाँ पर क्लोज आवर स्टेटमेंट। सो आफ्टर इम्प्लीमेंट द जावास्क्रिप्ट गाइज, इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि हमारा ओवल स्लाइडर का जो प्रीव्यू है वो कैसा है। इसके बाद हम इस पर पिक्चर्स इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर हम आपको फाइनल प्रीव्यू अपनी कंप्लीट वेबसाइट को गो थ्रू करवाएंगे। सो आज का लेक्चर हम इंशाल्लाह यहीं पर ये वाइंड अप करने वाले। सो यहाँ पर यू कैन सी द कंप्लीट व्यू और मैं स्क्रॉलिंग कर रही हूँ और इन द एंड में हमने हमारा जो ओवल कैरोसेल था इज लुकिंग लाइक दैट। आप अपने हिसाब से पिक्चर्स लेते हैं हम यहाँ पर सिंपल डायरेक्टली हम किसी भी वेबसाइट से पिक्चर गेट कर लेते हैं। सो आई जस्ट ओपन रैंडमली इमेजेस। सो कोई सी भी फ्री स्टॉक वेबसाइट पर आ सकते हैं आप, वहाँ से आप कोई भी पिक्चर गेट करना चाहें तो इजीली लिंक के थ्रू गेट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल इन योर फोल्डर तो ऑब्वियसली आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से हम कॉपी इमेज लिंक कर लेते हैं।
एंड देन बैक टू VS और यहाँ पर आकर सिंपल हम पिक्चर इम्प्लीमेंट कर देते हैं जो कि आपने इमेज सोर्सेज बना के रखे हुए थे। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ हेयर, सेकेंड वन, एंड आप अपने हिसाब से और देना चाहें तो और भी बना सकते हैं आप कमर्स। सो बनेंगे ऐसे ही जिस तरीके से हमने बनाए। ओके, यहाँ पर अनदर इमेजेस गेट कर लेते हैं, copy image link and then back. Here is the fourth one, sorry third one. So fourth पर आ जाते हैं और इधर भी हम एक पिक्चर गेट कर लेते हैं। Left click, copy image link and then back, paste here. So अब हम मैन की पिक्चर ले लेते हैं। ओके फाइन, इन दोनों की ले लेते हैं। So this is the very easiest way to create your crypto websites. So simple, इसको रन कराते हैं और पिक्चर्स आपके सामने आ गई है। बहुत ज़्यादा सी स्ट्रेस सी हुई, मैं इसको एडजस्ट कर लेते हैं पिक्चर्स को। सो बैक टू द index.css और इन्फो के अंदर क्योंकि हमने इमेज है, सो इमेज को थोड़ा सा स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हो रही है, चेक कर लेते हैं कि क्या इशू है। सो क्लासेस पर आते हैं और यहाँ से सिंपल मुझे इमेज की क्लास पर आना है। क्लाइंट सेक्शन पे सो यहाँ पर हमें इमेज बॉक्स अंदर इमेज मिल गई गाइस। तो सिंपल मुझे यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक इसकी विदन हाइट नहीं दी, तो यहाँ पर हम 100 पिक्स रख के देख देते हैं विदन हाइट, ताकि वो पिक्चर बहुत ज़्यादा ही अजीब सी जो आ रही है व्यू देख लें आप इसका। तो मैं इसको चेंज करती हूँ, नाउ इट्स लुक लाइक दैट। सो सारी पिक्चर्स एडजस्ट हो गई हैं। सो ये आज की लेक्चर कंप्लीट हो गया गाइस। इट्स अ कंप्लीट वेबसाइट of about cryptocurrency. So it's very interesting and amazing. अब यहाँ पर if you increase the आप यहाँ पर लिंक नहीं दिए हुए हमने, सो लिंक देने का सबसे इजी और अमेजिंग मेथड मैंने पहले भी बताया है। इन सब में गाइज मैंने एक आईडी क्रिएट करी है और सिंपल कुछ नहीं करना, जितने भी सेक्शंस बनाए हैं इन सब में मैंने एक आईडी बनाई थी। ठीक है, अब करना क्या है, सिंपल आप टॉप पर आ जाओ और यहाँ पर बस आपने आईडी कॉल करनी। सो वन बाय वन, बस सिंपल कुछ ख़ास नहीं करना। यू कैन कॉल हेयर द आईडीज़। सॉरी मैं बाय मिस्टेक नीचे आ गई हूँ। ओके, सो होम पर आकर सिंपल अगर होम की आईडी बनाई है आपने तो आप होम की आईडी दे सकते हैं हैश के साथ। सर्विसेज की आपने आईडी बनाई है तो आप सर्विसेज की आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर अबाउट की आईडी आ जाएगी आपकी। बट इट्स वेरी मैंडेटरी गाइस कि आपकी जो भी आप आईडी कॉल कर रहे हैं वैसे ही सेक्शंस आपने बनाए हुए हो। मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ एक दफ़ा। देखिए सर्विसेज के अंदर एस नहीं है, एस लगा देती हूँ तो वो फिर कॉल हो जाएगा वहाँ पर। अगर आप एस नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो सर्विसेज कॉल नहीं होगी। ठीक है, अब हो जाएगी कॉल। इस तरीके से अगर मैं अबाउट पर आ जाती हूँ और मैं अबाउट का चेक करती हूँ, ठीक है अबाउट ओके है। इसी के साथ साथ मुझे वाई भी ओके है। सो वाई को एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है जैसा लिखा था और टीम को भी वैसे ही लिखना है। ओके, आते हैं दोबारा से ऊपर। सो यहाँ पर वाई है स्मॉल लेटर के अंदर, तो आपने भी वैसे ही राइट डाउन करना है। और यहाँ पर टीम है स्मॉल में। ठीक है जी, सिंपल। यहाँ पर इन्फो देना चाहें तो आप इन्फो दे सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। सो लॉगिन के अंदर इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड तो आप लॉगिन के फॉर्म बना के भी और ज़्यादा चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हैं। सो इसको रन कराते हैं
अभी देखें कोई भी लिंक ओपन नहीं हुआ है। अब जैसे सर्विसेज पर आते हैं, ओके कोई प्रॉब्लम है चेक कर लेते हैं। अबाउट का भी लिंक वर्क नहीं कर रहा, लेट मी चेक कि क्या इशू है। सो सिंपल सर्विसेज के अंदर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक था गाइस, तो सिंपल हमने रिफ़्रेश करना था। इसके बाद हमने इसको रिफ़्रेश किया। नाउ यू कैन सी आप अबाउट पर आ गए हैं। इस तरीके से अगर आप इसको फिक्स कर लेते हैं नैव बार को, तो फिर नैव बार ऊपर ही रहेगी आपके हिसाब से, जिस तरीके से भी आप रन करना चाहें। सो आई होप गाइज आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग क्रिप्टो वर्ल्ड की एक वेबसाइट हमने आपके सामने आपके लोगों के साथ शेयर की है। सो मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। इफ़ यू रिक्वायर्ड द सोर्स कोड तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू द सोर्स कोड। सो मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।